वेलकम टू वी लर्न में आपका स्वागत है. टॉपिक फॉर टुडेज डिस्कशन इज कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, आउटलेट सिलेक्शन and post-purchase decision. Topics to be covered are outlook selection and purchase and post-purchase behavior. Outlook selection and purchase. Retail outlet refers to any source of product or service for consumer. कोई भी ऐसा सोर्स जहाँ से आप जाके अपने प्रोडक्ट्स खरीद सकते हो, राइट? अब अगर हम कैटेगरीज ऑफ प्रोडक्ट्स देखें बेस्ड ऑन देयर परचेज कैरेक्टरिस्टिक्स इन रिलेशन टू इंटरनेट शॉपिंग, तो हम कन्वीनियंस प्रोडक्ट्स कहते हैं, शॉपिंग कह सकते हैं, कन्वीनियंस शॉपिंग. तो दे आर लो रिस्क डिस्क्रिशनरी आइटम्स. Internet sales will be largely successful where huge selection and substantial discounts are important, right? एक होता है researched items. They are high information, expensive planned purchases. Internet sales will relate to items with low style content and those for which touch is not important. फिर एक होता है replenishment products purchase. Here these includes products with moderate cost and purchased very frequently. Products which are relatively inexpensive and easy to ship will be more successful, such as OTC healthcare products, right? According to J.J. Stoltman, a consumer can follow three basic sequences while making a purchase decision. The first one is brand first, outlet second. अब इसमें retailer strategy क्या रहती है? Here the image advertising, managing shelf location analysis, appropriate pricing is there. As far as manufacturing strategy is considered, distribution in key outlets are there, point of purchase displays are there, shelf space, strengthening existing outlets. The second thing comes in the sequence is outlet first and brand second. Here many brands and or key brands are there in a single outlet. There are cooperative ads featuring brand prices, right, and deals on the brands. And manufacturing strategy इसमें क्या रह सकती है? More elective distribution, brand availability advertisement, brand image management is there. जो थर्ड स्टेज आ जाती है वो ब्रांड एंड आउटलेट एट द सेम टाइम की होती है. Herein the retailer strategy is margin training for personnel. There are multiple brands or key brands. There are high services or low price structure. फिर होता है मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रैटेजी. इन दिस केसेस इंसेंटिव टू रिटेलर्स, सेल्स पर्सनल, एंड हियर द डिस्ट्रीब्यूशन इज इन द इम्पॉर्टेंट रिटेल आउटलेट्स. अब हम आउटलेट इमेज की बात करते हैं. द आउटलेट मे बी थॉट ऑफ हैविंग some personality, right? Some stores have clearly defined image, good or bad, and some others tend to blend into the crowd. They may not have anything distinctive about them and may be overlooked for any reasons. Now here the store image refers to the consumer's perception of all the attributes associated with the retail outlet, such as its location, the merchandise which are available there, the knowledge as well as the congeniality of the salesperson. This image is similar to the concept of brand image, right? When we talk about the dimensions of the store image, तो ये basically there are 9 dimensions. और इन 9 डायमेंशन के देर आर रिस्पेक्टिव फ्यू कॉम्पोनेंट्स. तो अगर हम मर्केंडाइज की बात करते हैं विच इज़ द फर्स्ट डायमेंशन ऑफ द स्टोर इमेज, तो मर्केंडाइज में क्या क्या कॉम्पोनेंट्स हम इंक्लूड कर सकते हैं? इट कुड बी क्वालिटी, इट कुड बी सिलेक्शन, इट कुड बी स्टाइल एंड इट कुड बी प्राइस. हम सर्विसेज की बात करते हैं
तो ले अवे प्लान क्या है, सेल्स पर्सनल कैसे हैं, इजी रिटर्न, क्रेडिट एंड डिलीवरी की हम कंपोनेंट्स इसमें इंक्लूड कर सकते हैं. हम क्लाइंटाइल की बात करते हैं तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है विच इज़ कस्टमर्स. फिजिकल फैसिलिटीज़ की बात करें तो क्लैनलीनेस इज़ देयर, स्टोर लेआउट इज़ देयर, शॉपिंग ईज इज़ देयर एंड अट्रैक्टिवनेस इज़ देयर. कन्वीनियंस की बात करें तो लोकेशन एंड पार्किंग प्लेज अ मेजर रोल. प्रमोशन की बात करते हैं तो एडवर्टाइजिंग इज़ देयर. फिर स्टोर एटमॉस्फेयर में कंजेनियलिटी, फन, एक्साइटमेंट एंड कंफर्ट होता है. इंस्टीट्यूशनल में हम स्टोर रेप्यूटेशन को देखते हैं और पोस्ट ट्रांजैक्शंस में हम सेटिस्फैक्शंस को देखते हैं. अगर अब हम इसमें रिटेलर्स ब्रांड की बात करते हैं तो रिटेलर्स का ब्रांड क्या है, शॉपर स्टॉप एक ऐसा एग्जाम्पल है, राइट. देर आर सम स्टोर्स लाइक शॉपर स्टॉप, they carry their own brands, right, and they have their own international presence, international or national thing, right. तो जब हम ऐसी बात करते हैं तो this is an appropriate example. और इसके मल्टीपल आपको, अगर आपकी जो शॉपर स्टॉप है इसमें हम शॉपर स्टॉप को एडवर्टाइज करेंगे, नॉट द ब्रांड विच आर देयर इन द शॉप, राइट. एक होता है रिटेल और लोकल एडवर्टाइजिंग. द रिटेलर्स advertising objective focuses on communicating to consumers by at the store, right. तो बिग बाज़ार है, वो आपको 5 दिन सस्ता का ऑफर देता है, तो दे मेक यू बाय ऑन द फ्लो, राइट. फिर लोकेशन ऑफ आउटलेट एंड साइज. आउटलेट का लोकेशन और साइज ऑल्सो प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल. सो they again have a very obvious impact on store patronage, and consumers outlet selection depends also on the location. If the differences in other attributes are not significant, right, consumers generally will choose the store that is closest. The size of the store again is also a very important consideration, an important factor that influences consumers choice. अगर हम कंज्यूमर शॉपिंग ओरिएंटेशन की बात करते हैं, इट रेफर्स टू अ शॉपिंग स्टाइल ऑफ कंज्यूमर्स दैट पर्टिकुलरली एम्फसाइजेस सर्टन एक्टिविटीज़ और शॉपिंग मोटिवेशन से. सो साइकोग्राफिक बेस्ड ओरिएंटेशन में पहला है हमारा इनएक्टिव शॉपर्स. दे कैन बेस्ट बी डिस्क्राइब्ड बाय देयर एबिलिटी or their lack of activity. They have extremely confined lifestyle and shopping interest, and they do not engage in outdoor activities. दूसरा है active shoppers. They are viewed as tough shoppers and their lifestyles are generally very demanding. They are fond of outdoor activities and undertake do-it-yourself projects. एक होते हैं हमारे service shoppers. They are focused on demanding substantial in-store service when they shop and usually visit conveniently located stores with friends. कुछ होते हैं हमारे traditional shoppers. They like outdoor activities, but they do not have that degree of enthusiasm for shopping. They are likely to be less price sensitive and they do not insist on store personal help or attention. एक होता है डेडिकेटेड फ्रिंज शॉपर्स. दे सीम टू बी रिस्क टेकर, enjoy do it yourself activities and they are more inclined to new products. एक होते हैं हमारे प्राइस शॉपर्स. दे आर extremely price conscious and are willing to make extensive search efforts to meet their price requirement. एक होते हैं हमारे लास्ट होते हैं ट्रांजिशनल शॉपर्स. They are consumers in the early stages of family life cycle and show practical interest in a number of outdoor activities, right? Types of purchases की अगर हम बात करें तो कुछ हमारी purchases होती हैं which are specifically planned.
Here the consumer decides a specific brand or item before visiting the retail outlet, right, and make that specific purchase. एक होता है generally planned activity. The consumer makes a decision before entering the retail outlet to buy a product category such as fruit, right, but not the specific item. भाई हमें fruits खरीदने हैं but उन्होंने identify नहीं किया कि कौन सा fruit खरीदना है. एक होता है substitute. Here a change from a specifically or generally planned item to a functional substitute. एक बिल्कुल ही अनप्लान्ड होता है. द कंज्यूमर बाइज एन आइटम दैट ही और शी डिड नॉट हैव इन माइंड ऑन एंटरिंग द रिटेल आउटलेट. एक होता है इन स्टोर डिसीजन. द सम ऑफ जनरली प्लान्ड सब्सटीट्यूट एंड अनप्लान्ड परचेजेस इज योर इन स्टोर डिसीजन. अब हम पॉइंट ऑफ परचेज की बात करें, पॉइंट ऑफ परचेज डिस्प्लेस की बात करें, मोर देन 80% ऑफ supermarket shoppers make their final point purchase decision inside the retail outlet. This makes point of purchase activities have become very important. By creating an effective combination of attractive store layout and displays, the retailer can change an unexciting retail environment into one that is very very impactful. एक हम डिस्काउंट्स और डील्स की बात करते हैं, यू नो, प्राइस डिस्काउंट्स एंड अदर प्रमोशनल डील्स दैट ऑफर सेम फॉर लेस और मोर फॉर द सेम आर जनरली एसोसिएटेड विद पॉइंट ऑफ परचेज डिस्प्लेज, राइट. तो इंक्रीज इन सेल्स comes from basically 4 sources. Those consumer who do not normally visit the store announcing a price deal may come to buy the brand. Second क्या हो सकता है? Current brand users may buy in advance of their anticipated needs. Third is those consumers who otherwise use competing brands may switch to the brand available at the reduced prices. The fourth category is non-product category buyers may buy the brand because it is now a better value to substitute the product. Retail outlet जो है हमारा, that also is an important consideration. The layout, the fixtures, lighting, sound, odors, dress, behavior of the personnel, they make an important impact. The outlet atmosphere produces a significant effect on customers' mood and their willingness to visit and shop around in the store. हम परचेज की बात करते हैं. Once the consumer has chosen a brand, उसने outlet भी select कर लिया, he has to take a final step, and the final step of completing the transaction is to make a purchase, right? And many a times the purchase action is generally terminated, generally considered as the last contract that the customer will have with the shopping trip. ठीक है, वो ट्रिप के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है, वो टर्मिनेट हो जाता है जब आप परचेज कर लेते हैं. पोस्ट परचेज की बात करें तो कंज्यूमर्स if they have favorable post purchase evaluation, that automatically leads to satisfaction, right? They are satisfied. वो उनका behavior कैसा है, अगर उनका favorable रहता है तो that leads to the satisfaction. Consumers are generally engaged in constant process of evaluating the things that the product they buy, right, and integrated into their daily consumption activities also. Now, 2 activities that needs to be done are what are the dimension of store images and what are the types of purchases. Thank you and have a nice day. Keep learning and we learn.